Hey everyone, welcome back to the channel. I hope all of you are doing good. In today's video, we are going to learn about the notebook widget in Tkinter. Basically, this widget allows you to create a tabbed interfaces similar to Google, Chrome, Samsung Internet browser, Firefox, and other browsers that allows you to access several things in one application only. For example, if you want to access your Gmail ID, you can access that in a new tab. Then you can uh, go to the new tab to access any other search terms, like you're searching the Python courses. You can access that as well. So it is similar to like that, but not exactly same. So this is what notebook widget is all about. Basically, this works on improving user experience by enhancing the user interface. So how we can all do this, we'll learn in the end of the video. Apart from this, this can overall create a complex application into a simple and user-friendly application. So let's get started. So basically, this is the syntax that you can see here. This is a syntax that we always use when we use Tkinter module. These are the new ones that you might have witnessed here. So let's get started. तो जैसा मैंने बताया कि जो नोटबुक विजेट है वो आपका टैब इंटरफेस बनाने में आपकी हेल्प करता है, स्विच करने में हेल्प करता है अलग अलग सेक्शंस में आपके एप्लीकेशंस में. यही है आपका नोटबुक विजेट. नेक्स्ट इसमें आती है नेक्स्ट इज ऑल अबाउट हियर सिंटेक्स. लाइक रूट इज द पेरेंट विंडो. मैंने आपको लास्ट टू लास्ट और आपकी अभी तक के सारी वीडियोस में बताया है कि रूट इज अ पेरेंट विंडो. मोर देन दैट, टीके, नोटबुक रूट, ये सभी अभी हम सीखेंगे एट द एंड ऑफ द कोड. दिस इज हाउ अ नोटबुक लुक्स लाइक. दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोड दैट विल डू राइट नाउ. और ये है आपका इंटरफेस टोटली. ये फर्स्ट टैब है, ये सेकंड टैब है और ये आपका थर्ड टैब है. हर टैब में आपके पास फैसिलिटी होती है, आप डिफरेंट तरह का कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि हम हमारे क्रोम एक्सटेंशंस में भी देखते हैं कि आपके हर टाइम में अलग अलग कंटेंट रहता है, बिकॉज वी सर्च फॉर दोज. यहाँ पे भी आपके पास वो फैसिलिटी है एंड वी कैन डू दैट एज वेल. सो द वेरी फर्स्ट टैब यू कैन सी हियर, इट मेंशन वेलकम हैप्पी दिवाली. टैब 2 विजेट्स, टैब 3 सब्सक्राइब. इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंटेंट है जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा. सो जंप करते हैं हमारे कोड की तरफ सो दैट वी कैन लर्न आर कोड हियर. सो हमारा स्टेप इसमें होता है हमारे कोड के लिए टू इम्पोर्ट आर टीके. to import Tkinter as tk. Then we'll write from Tkinter import ttk. गाइस सेम चीज है यहाँ पे. हम रूट लिखेंगे. अब विल राइट टाइटल, विल राइट द नेम, क्या है इसका नाम. देन we'll move ahead. Now we have to mention geometry size of this particular window कि हमें क्या size रखना है इसका. So I'm keeping it as around 800 to 600 just to look a little different interface. Then we'll call notebook here. Before that, I would like to tell you one more thing, guys, कि आपको ये notebook use करने से पहले you have to ensure कि आपके पास notebook नाम का लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो, आपके पाइथन में इंस्टॉल्ड हो. अगर नहीं इंस्टॉल है, सो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन जस्ट सिंपली कम हियर इन द टर्मिनल एंड you can type it install notebook, and boom, you will be getting your Tkinter installed here. I can show you a reference here. I've done it today. Yeah, so you can see here
After giving the command pip install notebook, what I got this here. Yeah, you can see here pip install notebook. Then you can see collecting notebook, and it will collect like this. It can take time, like it can take around 10 minutes if your network is working too fine, and it can take 5 minutes as well. So you basically have to give this command, and your notebook will be installed in the terminal. After that, you can use it clear. After that, you can use it very good in a very good way. So yeah, here we were. We have to write notebook. Notebook is equals to ttk dot notebook. Then we'll call root here. ओके सो हमारा ये डन हो गया है. अभी हम बनाएंगे notebook. One more thing, अभी हमने okay, let's first complete this, then we'll talk about that. Then we'll write both here, then we'll write expand is equals to true. Okay, then we will not give it like this, we'll just mention here equals to sign and done. Okay, now we are done. Now we have to create our tabs. पहले हम बनाएंगे हमारा first tab. ये टैब 1 बनाने के बाद हम सब कुछ कॉपी पेस्ट करते हुए चलेंगे फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज वीडियो विल बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा. इससे बेटर है टू फिनिश इट इन अ सून. ओके देन आई ऐड. अब टैब्स बनाने से पहले आई वांटेड टू ऐड अ फ्रेम. फ्रेम ऐड करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है. So basically, frame is all about a widget. Frame is a widget that holds other widgets because इसमें हम अलग अलग widgets यूज कर रहे हैं. हो सकता है हमारे tab 1 में कुछ complex widgets हो, tab 2 में कुछ complex widgets हो, tab 3 में कुछ complex widgets हो. तो उन सबको together hold रखने के लिए ये widget बना है frame. तो उसको frame करते हैं हम. और फ्रेम करने के बाद उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना और लॉजिकल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना, लेआउट को जो कॉम्प्लेक्स लेआउट है उसको इजी वे में बनाना, पैडिंग और बॉर्डर से सारे फीचर्स हमारे फ्रेम को ऐड करने के बाद और आ जाते हैं हमारे उस पर्टिकुलर कोड में. तो इसलिए हम फ्रेम ऐड करते हैं यहाँ पे. तो इसीलिए इस कोड में मैं भी फ्रेम ऐड करने वाली हूँ जस्ट फॉर द गुड अपीयरेंस. सो शुरू करते हैं. हम अपना इसमें बनाएंगे frame 1. फ्रेम के लिए कुछ और कमांड्स देने की जरूरत ऐसा होती नहीं है. Okay, you just need to give a frame कि आपको फ्रेम देना किस चीज में है. हमने फ्रेम अलॉट कर दिया है. फ्रेम विल नेम इट 2 इज इक्वल्स टू के डॉट फ्रेम. हम यहाँ फिर से नोटबुक लिख देंगे बिकॉज हमें आइडियली नोटबुक में ही चाहिए फ्रेम. देन क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल 3 फ्रेम्स, क्योंकि हमारे पास हम 3 टैब्स हैं जो हम बनाने वाले हैं अपनी इस वीडियो में. सो So we have done with the creation of frames. Now we have to add frame to notebook. Okay, now for this we have to write notebook. Not this one, we have to write the small one.
Okay, so notebook dot add, then we'll add frame वन, हमें frame वन चाहिए यहाँ पे। फ्रेम वन में भी हमें इसमें क्या टेक्स्ट चाहिए हमारे फ्रेम में, विल मेंशन हियर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था हमारे उसमें स्क्रीनशॉट में, वी हैव मेंशन लेबल, राइट। नोटबुक डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू वेलकम, same goes here, notebook dot add, so I think spelling is not right here. ओके, सो फ्रेम भी हमने क्रिएट कर लिया है, हमने फ्रेम को नोटबुक में ऐड कर दिया है। नाउ वी हैव टू क्रिएट टैब, टैब वन, इसके सिंपल है tk डॉट लेबल, then we'll mention frame one, text we'll mention here okay, we need to mention text here, so we'll mention your text as welcome. I know text can mismatch, but we'll mention here welcome. Then we'll write here font, we have to give a font, आप font देना चाहें तो you can give the font, otherwise you can skip it. Arial, like I'm giving a font as a Arial, you give any font, right? So I've mentioned here font as an Arial, font size as in 24. Then this is done. Then I'll pack it here as well. मैं इसको pack यहीं पे कर दे रही हूँ just for the ease of understanding. Then okay, so we'll do it for others as well. We'll copy it, like it is easy, quite easy. Just I wanted to mention here as Happy Diwali. Happy Diwali. Then, then now we don't have to mention here pad. हर जगह pad हम pad ही mention करें. That's not so important. So we are just closing it here. इसका size थोड़ा सा कम कर देते हैं just to make कि थोड़ा different दिखे. Happy Diwali. So yeah, let's just increase the size. Let's say we'll mention 30. Done. So this is it. हमारे यहाँ पे पहला जो है टैब क्रिएट हो गया है। नाउ वी हैव टू क्रिएट आवर सेकंड टैब, के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस फॉर सेविंग टाइम। टैब टू, just tab 3. Okay, now we just have to change the frame, right? And we can change some text as well, otherwise the code is same, we don't have to change code and we don't have to do anything else here. We can just change frames. So I'll mention it here as a second frame, and let's say we'll mention it as a third frame,
Okay, let's keep this welcome in every tab. You can just change this. Subscribe now. And in the second one, we'll mention here. So this is a message to my all subscribers that this Diwali brings a lot of joy and happiness in everyone's life. So this is how our whole code is completed now. Our Tkinter is our widget is created. So that's it. We are done with this. I hope यहाँ तक की सारी चीजें सबको clear हो गई हूँ. Like this is for the Tkinter. I think we don't need this. Okay. So this is for creation of notebook and this is for frames. This is frame. We can. This is these are the lines for adding frame to notebook. Tab 1, tab 2, tab 3. Then let's give it a try. Okay, so this is what that we got as the output. So this is notebook label. Welcome, subscribe. Okay, wait. Welcome. This okay, Diwali wala term is getting so big. Like this is we have to create. We have to small down the font छोटा करना पड़ेगा so we can do that. We'll do that. Apart from this, I think everything looks fine here. Subscribe, welcome, subscribe now, label. This is your tab 1, guys. This is a tab 2, this is tab 3. We just have to change this size of these font and even this. This should be capitals. Okay, so yeah, let's make the needful changes, then we can see it again. Okay, we'll keep it 18 only. Let's keep it 20. I think 20 is 18 is good, I think. Wait, why it's getting so big? Okay, okay, done. So label, happy Diwali, welcome. So okay, I think I've changed the size of different. Yeah, it's 18. 18 and happy Diwali, welcome. So everything looks fine, guys. If you have any doubt till here, do let me know in the comment section. Also, I hope